Hi guys, greetings to all in Dr. Abha Chemistry Pathshalas. Let's get started with our next topic, that is aromaticity. So guys, now it is clear to you from my previous lecture that aromaticity has got something more than the aroma. The conditions for aromaticity, the compound has to be planar so as it can facilitate the delocalization of the electrons. So there has to be proper delocalization of the electrons. The compound has to be cyclic, it has to be a closed system, and it has to have 4n plus 2 pi electrons, where n can be 0, 1, 2, 3. So we can have 2 pi, 6 pi, 10 pi, 14 pi, 18 pi electrons. If these are the conditions which are followed, then the compound is going to be extra stable. So first, if you look at benzene, benzene has all the three conditions. You can see the three bonds. There is delocalization possible. It is planar because all of them are sp2, and it is aromatic. So if you look at the second example, which is cyclopropenyl cation. So because of that positive cation, the resonance is possible. So if the resonance is possible, the delocalization is there. It has 2 pi electrons and it is closed, cyclic. So it is aromatic. So let us take few more examples and over to conditions for aromaticity, as we discussed, are the compound has to be cyclic, planar, that is all carbon, they should be sp2 hybridized. sp2 hybridized means planar, right? And delocalization has to be complete. Should delocalize easily. And fourth is 4n plus 2 pi electrons, where n ka value has to be 0, 1, 2, n. The fourth is known as Huckel's rule. Let's consider a few examples. Benzene. 3 pi bonds. 3 pi bonds means 6 pi electrons. So n is equal to 1 if you follow 4n plus 2 pi, right? So one condition is already met. Second condition, cyclic. It is cyclic, it is closed. Third, delocalization. Follow the arrow. This can come here, this can come here, this can go there. So it is completely delocalized. So third is also done. Fourth is planar. You know, all of the carbons are, all carbon are sp2 hybridized, double bond sub pair. So sp2 hybridized is planar. So this is a example of aromatic compound. Let's consider naphthalene. N is equal to 2. How many? It has got 5 pi bonds. That is 5 pi bonds, that is 10 pi electrons, right? So first condition met, Huckel rule, all are sp2 hybridized. If you look at all the carbon, double bond, 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 double bond. Whenever there is a double bond, it is sp2 hybridized. So it is planar. One can make out it is closed, and delocalization is possible. Just see, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. All can move. So delocalization. So this is aromatic. One more example. 1 pi bond. So 2 pi electron. First condition met, Huckel's rule. Second condition, delocalization देखते हैं. Blue color को follow करो. This comes here, charge comes here. So second diagram, if you want to draw, क्या हो जाएगा? If you really want to show it, so यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, ये चार्ज यहाँ आ जाएगा. delocalization हो सकता. Second condition met. Cyclic आपको दिखाई दे रहा है. And all are, this is sp2, 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 sp2. So this is planar, right? So all of the conditions met, Huckel's rules, cyclic, delocalization,
and planar. Next example, conjugation बिल्कुल है, ये यहाँ आ जाएगा और ये चार्ज इधर आ जाएगा. So if you want, you can draw like this. This comes here, charges they come here, right? And so we can see, and all of them are either carbocation. This is sp2. This is also C plus is sp2. आपको पता है कार्बोकेटाइन जो कार्बन पे प्लस चार्ज होता है sp2 होता है. This is sp2, right? So cyclic भी है, planar भी है, 4n plus 2 pi. So this is a example of a aromatic compound. So let me draw a few more aromatic compounds and you can try on your own, right? We can see 2 pi bonds, right? Plus a pair of electron, right? So ये जो one lone pair है, ये कभी भी pi बन सकता है due to resonance. ये यहाँ अगर आ जाए, ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है. सो आपको ये कितने हो गए जाएंगे? दे बिकम 6 pi electron, राइट, एंड यू हैव कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, ठीक है, एंड प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है. ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है पेरिडीन. इसमें अगर आप देखो, इट ऑलरेडी हैज 6 pi इलेक्ट्रॉन, राइट, इट ऑलरेडी हैज 6 pi इलेक्ट्रॉन, बट जो आपके लोन पेयर है ना, ये किस में प्रेजेंट है? ये sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. सो इसलिए दे डोंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेक्सटेट. तो सेक्सटेट में जो है आपके दैट इज 6 pi इलेक्ट्रॉन ही है और दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द सेक्सटेट. तो ये आपका प्लेनर माना जाता है और 4n+2 को फॉलो करता है और आपको साइक्लिक दिखाई दे रहा है. सो दिस इज एरोमेटिक. ऑन सिमिलर लाइन्स यू कैन वर्क आउट ऑन दीज एज वेल. इसमें क्या होता है? one pair is in a part of sextet, the other doesn't form the part of the sextet. Okay, so, and let's do one more class, that is non-aromatic. Non-aromatic में क्या होता है कि one or more conditions will not be there. जैसे फर्स्ट है, इसमें देखो 6 pi इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइजेशन है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, बट नॉन साइक्लिक है, बट इट इज़ नॉन साइक्लिक, तो इट इज़ नॉन एरोमेटिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइक्लोपेंटाडाइन. ओके, सो इसमें क्या है? एक कार्बन sp3 हिब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन sp3 हिब्रिडाइज है. सो जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, राइट. एक आपका आता है साइक्लो ऑक्टा tetraene. So this is actually tub shaped. This is actually tub shaped होता है ये, तो इसकी वजह से इसको नॉन प्लेनर बोलते हैं. तो जो डिलोकलाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन एरोमेटिक. वन मोर एग्जांपल आई कैन टेक, लाइक दिस इज साइक्लोब्यूटीन कैटायन. इसमें देखिए दिस इज sp3 हिब्रिडाइज्ड, ये sp3 हिब्रिडाइज्ड होगा, राइट. सो ये यहाँ तक तो जाएगा लेकिन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. लेट्स डू वन मोर क्लास, दैट इज एंटी एरोमेटिक. साइक्लिक होगा, 1 प्लेनर भी होगा. सेकेंड कंडीशन, डिलोकलाइजेशन कंप्लीट, and the last is going to be 4n pi electrons,
right? Not 4n plus 2 pi, and this is going to be least stable. Least stable means most stable are going to be aromatic, followed by non-aromatic, followed by anti-aromatic. Anti-aromatic. इसमें n की वैल्यू क्या है? 2 है. दिस इज 4n pi इलेक्ट्रॉन. 8 है, सो 4n pi हो जाएगा. सारे के सारे ऑल आर sp2, ऑल sp2. सो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, डिलोकलाइजेशन भी कंप्लीट है. आप चेक करो, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. सो राइट, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल, cyclobuta 1,3 diene. So again n is equal to 2, 4n plus 4n pi electrons, all sp2. So planar भी हो जाएगा. cyclic तो दिखाई दे रहा है, but delocalization complete है, right? But it is very unstable. So this is anti-aromatic. Right? So these are few examples with the help of which you can find out whether a compound is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. So that was all about the aromaticity. So we did talk about anti-aromatic and non-aromatic, although it is not there in NCERT, but I just thought it will give you a good comparison of all the organic compounds. For the next class, we meet soon. Take care. God bless.